Hello everyone, benefits and challenges of rural tourism marketing. Video lesson 14th. Now, the content for the course would be rural tourism marketing, digital technologies for rural tourism marketing, developing cluster for rural tourism marketing, benefits and challenges of rural tourism marketing, and agri-tourism, its future as well. Now, the course would include total 20 video lesson. As you all can see, the session 14th would include introduction to rural tourism marketing, advantages of rural tourism marketing, benefits of rural tourism marketing, disadvantages of rural tourism marketing, and challenges of rural tourism marketing. This benefit and challenges of rural tourism marketing consist of introduction to benefit and challenges of rural tourism marketing, benefits of rural tourism marketing, and challenges of rural tourism marketing. So now let's have a look to the importance of rural tourism marketing. Before we go to the rural tourism marketing importance, let us discuss about what is rural tourism marketing. As an important branch of tourism, the rise of rural tourism has inspired rural areas to protect the local environment, inherent characteristics culture, develop tourism resources, develop tourism economy, and rise rural income, which has very well responded to all the call of rural revitalization strategy. So now come to the importance of rural tourism marketing. Rural tourism marketing is an important form of tourism sector which plays an important role and give many benefits to rural area community. When tourists travel to rural area, they support the local economy and helps in various ways. Rural tourism marketing help in development of rural areas and living standard of host communities. Rural tourism marketing is a grow form of marketing through tourism. It is not just far away stay and visit to rural areas. It is more than that. It benefits the host community of rural areas as well as surrounding natural environment through preservation and conservation of natural resources. Now, let us see about the purpose behind rural tourism marketing. The main purpose behind rural tourism marketing is to promote the business, make it stand out from rivals, attract customer and generate brand awareness. Many modern tourism marketing strategies make use the internet with website, online advertisers, email, social media platform often play a key role. Now, now let's have a look to the benefits of rural tourism marketing. It include first, it provide a source of new alternative or supplementary income and employment in rural areas. Second, rural tourism spurs infrastructure development in rural areas. Third, it helps to reduce gender and other social power. Fourth, it encourage collective community. Fifth, it reinvestigate local culture. Sixth, still the sense of a local pride, self-esteem and identity. Seventh, contribution to conservation and protection. Ninth, increase the living standard of local community. 10th, assist reimbursement and reuse of abandoned properties. 11th, provide opportunity for the retainment pollution in the areas that might otherwise experience depopulation. And the last and the 12th one is enable areas to repopulate it. Now, let's have a look to our disadvantages of rural tourism. Before we go to the disadvantages of rural tourism, let's have a look to the. There is a chance that limited unemployment will be generated for the rural people due to their limited knowledge and exposure. The rural people can be exploited. The rural people have to depend on the urban entrepreneurs so that the benefit may not reach them.
The urban investor will take away most of the profit. Now, as you can see in this slide, the first one is the major issues and challenges of rural tourism marketing is the need to preserve the environment and natural resources, the need of the education, proper understanding for both tourists and local people, the need to generate a democratic movement which help people at all the level to participate in the rural tourism development. The cooperative system in rural tourism can be an effective approach in bringing positive impacts in rural areas. Local people can monitor and control the negative impacts of rural tourism marketing on their basis of society if they have an equal stake in management and development. Now, let's have a look to the challenges for rural tourism marketing. The first one is economic leakage. Economic leakage in tourism, which means the idea that all of the money you spend on a holiday surprisingly little ends up in the pocket of the community you visit. Instead, for a number of reasons, it's end up leaking out. Second one is local price inflation in tourism, which means it is caused by the increasing in aggregate demand due to the additional financial resources international tourists bring to a country. If the supply of goods and services in the destination country cannot adapt to the increased effective demand, the journal price level will increase. What is the reason behind that local price inflation in tourist industry is it is caused by old land values with tourism generating additional demand for land. The extent to which inflationary price increases are compensated for local residents by economic benefits such as increased employment and income in uncertain reason. Third one is the short local employment structure, which means it provides the economic stimulus to allow for diversification of employment and income potential and also to develop resource within the country. Improvement in infrastructure and services can benefit both the local as well as the tourist. The fourth one is seasonal pattern of demands. Destinations with high fluctuation in seasonality often face various challenges such as overcrowding, high prices, inadequate infrastructure in peak season, as well as lack of service and job opportunities in the shoulder and low seasons. It also can be defined as imbalance between supply and demand in a given tourist destination over the course of year. Seasonal fluctuations are pervasive in the tourism system due to climatic and socio-culture cycle of both destination as well as in markets. The fifth one is manufacture of distort local culture for the commodification and stage authenticity. It also denotes here as an in this both positive and negative effect on the coast or host community and its cultural heritage. Tourism deal with experiences sold to tourists which has to be authenticated. Therefore, this paper aims to look at the authenticity and commodification of cultural event presented for the benefits of tourists throughout the resort in the Maldives and its implications on the authenticity of cultural product offered to the tourist. Authenticity played a wide role in tourist experiences and repeat business for the destination. Commodification, on the other hand, is a byproduct of making the event authentic in order to be presented to the tourist, since these events cannot be present in the origin form or length. Hence, the event are staged for the benefit of the tourist because cross-cultural encounter drive authenticity of the tourist experience and create more business to the destination.
The sixth one is destroy indigenous culture. It means that the tourism threatens indigenous knowledge and intellectual property rights, their cosmovisions, technologies, religions, sacred sites, social structure, and relationship with wildlife, ecosystem, economics, and basic right to informed understanding, and as well as reducing indigenous people to simply another reason. Seventh one is natural habitat destruction of rural wildlife, which means it is also termed as habitat loss or habitat reduction. It is the process by which a natural habitat becomes incapable of supporting its native species. The organisms that previously inhabited the site are displaced or dead, therefore reducing biodiversity and species abundance. The reason behind that is we can say as elimination or alteration of the condition necessary for animal and plant to survive not only impact individual species but also the health of the global ecosystem. Habitat loss is primarily thought not always human caused. So the eighth one is littering, emission and other form of pollution. First, let's have a look to the littering. What is littering? Littering is the improper disposal of waste product. While it can happen by mistake as an unsecured objective flying out of the bed of a truck, litter continues to be largely a deliberate act. Let's talk about what will be the most littered items such as cigarette butts, fast food packaging like bags, cup, serving item, food packaging like wrappers, boxes, film styrofoams, expanded polystyrene, alcoholic beverage container like beer and single serve wine, tires, vehicle derivatives, plastic bags, plastic bottle, and construction waste as well. Unfortunately, there are few more examples of litterings. Cigarettes are the most frequently littered item, which has been estimated 9.7 billion cigarette butts discarded along roadways and waterways also. How it affect our natural rural tourism marketing, as in these are the chemicals which aren't natural to the environment and cause a number of problems. For example, cigarette butt can contain chemicals such as arsenic. These poison can make their way into the soil and freshwater source, which negatively impact both human as well as animals. Second one is emission, which means something sent forth by the emitting, such as electromagnetic radiation from an antenna or a celestial body. Usually, emission is a substance discharged into the air as a smokestack or an automobile engine. For example, car exhaust, bulbs, and radio broadcast are the example of emission. Technically, an emission is anything that has been released out into the open. Emission, how it causes the natural, or you can say that rural tourism marketing. It also can be produced by burning fuels for power or heat through chemical reaction and form leak to the industrial process and equipment. It also process as a reduced emission by the mean of making power one side renewable and other climatic friendly energy resources. The last and challenges for the rural tourism marketing is congestion. It means it occurs when physical obstruction block the natural flow or narrow passage cause the flow to slow down. Congestion can also occur when the flow or the number of visitors is excessive in relation to the capacity of destination or site to accommodate that flow.
And this, you can say that all these are challenges we faced while rural tourism marketing take place. Now, सभी को नमस्कार। ग्रामीण जीवन संस्कृति, संस्कार, कौशल, कला और विरासत का प्रतीक है। एक साधारण जीवन जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। ग्रामीण जीवन को समझने और उसका आनंद लेने के लिए हमें ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। ग्रामीण पर्यटन के विपिन के बहुत से लाभ हैं और बहुत सी चुनौतियां हैं। महाविद्यालय में हरेवली गांव को लेकर एक प्रोजेक्ट किया गया है। यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और लाभ उठाने के लिए जाना है। आइए लेते हैं एक सुखद अनुभव हरेवली गांव के पर्यटन का। इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ नोडल ऑफिसर डॉक्टर मंजू गोयल हैं और वॉलंटियर्स हैं विशा शर्मा, शगुफ्ता खातून, पूजिता कटारी, नाजिया प्रवीण और वंदना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरेवली गांव मुनक नहर के किनारे बसा है। मुनक नहर के दोनों तरफ घने वृक्ष लगे हैं। सुंदर सुंदर पक्षी व विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। हरेवली गांव जैसा नाम बिल्कुल वैसी ही पहचान। हरे भरे लहलहाते खेत, खेतों के बीच छोटा सा मंदिर। आज भी पुराने घर और चूल्हे की बनी रोटी खाने को मिलती है। गांव में भारतीय संस्कार और संस्कृति आज भी जीवित दिखाई देती है। खेतों में बीजों की बुआई, कटाई, छटाई जैसा सुंदर दृश्य बड़ा ही मनमोहक लगता है। गांव तक यातायात के साधन बहुत कम है। आइए हरेवली गांव में ग्रामीण पर्यटन विपणन के लाभ और चुनौतियां जानें। गांव के शुरुआती छोर पर नहर किनारे स्थित है प्राचीनतम हनुमान मंदिर। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए हर मंगलवार व शनिवार को आते हैं। मंदिर के आसपास युवाओं को रोजगार के विभिन्न अवसर मिलते हैं, जैसे कि मिष्ठान भंडार, होटल, साज सज्जा का सामान, हाथ के बने उत्पाद आदि। मंदिर तक सार्वजनिक यातायात के साधन आसानी से मिल जाते हैं। मंदिर में दर्शन के बाद सफर शुरू होता है नहर किनारे पर्यावरण को निहारते हुए भ्रमण का। सीआरपीएफ का कैंप नहर किनारे होने से ये इलाका पूरी तरह से सुरक्षित है। नहर किनारे चलते चलते ताजगी का एहसास कर पाएंगे। एक सुकून मिलता है यहाँ आकर। चारों तरफ शांत माहौल और बहते पानी की कलकल अत्यंत मधुर लगती है। बीच बीच में पानी पर बैराज भी बने हैं। रास्ते में फूलों की खुशबू और फलों का ताजापन महसूस किया जा सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए सार्वजनिक वाहन नहीं है, निजी वाहन से ही आना होगा या पैदल चल के एक सुखद अनुभव लेना होगा। हम पहुँच गए हैं गोपाल गोसदन। गोपाल गोसदन में स्वागत के पश्चात आप लोकप्रिय हरियाणवी लोकगीत रागिनी का भरपूर आनंद ले सकेंगे। तीन लोक सरकार, जी पानी से एक सजी हुई अति सुंदर बैलगाड़ी में गौशाला का भ्रमण कर सकते हैं और गौसदन की सुंदरता को निहार सकते हैं। गौशाला बहुत बड़ी है और जरूरत के अनुसार गाय के अलग अलग वार्ड बने हैं। आप कुछ गौशाला के बारे में हमको बताइए। गौशाला के बारे में जी यहाँ पे ये अलग अलग सबको पार्टीशन में किया जाता है। जैसे बच्चे अलग रखे जाते हैं, गाय को अलग रखा जाता है, दूध वाली गाय अलग रखी जाती हैं और जो सांड होते हैं, जो बंदी होते हैं, उनको अलग रखा जाता है। यहाँ सब एक ही सबको मिक्स करके रखते हैं क्योंकि साफ़ सफाई काफ़ी अच्छे से रखते हैं। दो तीन टाइम उनकी सफाई करते हैं। इसमें देखो यहाँ पर आज बाहर से बहुत सारे लोग आ रखे हैं, तो वो सिर्फ आते हैं और इन लोगों को चारा वारा दे के चले जाते हैं या फिर कुछ खरीदते वगैरह भी यहाँ पर? नहीं, खरीदते हैं। हमारे यहाँ पे हमने काफ़ी प्रोडक्ट बना रखे हैं जो पंचगव्य से बनते हैं, तो वो यहाँ से
खरीद के भी लेके जाते हैं। किस प्रकार के प्रोडक्ट? जैसे ये हवन कुंड वगैरह आप बता रहे हो कि वो यूज़ करते हैं। हाँ जी, वो हवन टिक्की होती है, वो हवन में यूज़ होती हैं। और अगर घर में आपको मैक करनी है तो वो करना तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दूध वगैरह का ज़्यादा होता होगा, तो जैसे वहाँ पर क्या क्या? या मोस्टली तो दूध ही बिकता है, वो हम सप्लाई करते हैं। जो हमारे यहाँ के ट्रस्टी है ना, उनको वहाँ पे उनके घर पे जाके सप्लाई करते हैं। यहाँ का दूध कहाँ कहाँ तक जाता होगा? दिल्ली में जाता है, मोस्टली दिल्ली में जाता है। लगभग दिल्ली को आप लोग कवर कर लेते हो। आप यहाँ पर कब से जुड़े हैं? मुझे हो गए यहाँ पे लगभग 1-1.5 साल हो गई। मुझे 5 महीने हो गए। 5 महीने होते हैं। 14 साल। और यहाँ पर ज्यादातर बीमारी किस तरीके की होती है गायों को? ज्यादातर बीमारी यहाँ पे ये पैर में दिक्कत वाली ज्यादा होती है। जो पैर ये नीचे खुर नहीं होते, खुर वाली ज्यादा है गोबर की वजह से, क्योंकि गोबर गाय कर देती तो उसी गोबर में उनका रहना होता है, तो उस वजह से पैरों की ज्यादा दिक्कत होती है। जगह हमारे पास जगह नहीं। हाँ, जगह नहीं है और कोई ज्यादा बीमारी यहाँ पे। बहुत सारे लोग आते हैं और वो गायों के साथ देखने यहाँ पर सामान भी खरीदते हैं। हाँ, जो बाहर से लोग आते हैं, जैसे यहाँ का हमारी गायों का दूध भी बाहर जाता है, गोबर से लकड़ियाँ बनती हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर लकड़ी की कमी है, तो इसलिए यहाँ मशीनें आई हैं और गोबर से जो है लकड़ियाँ बनती हैं और दिल्ली में जो शमशान भूमियाँ हैं वहाँ जाती हैं और हमारी काफ़ी बहन बेटियों को, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा रोजगार मिल रहा है। उनको तनख्वाहें मिलती हैं 15,000 से लेके 40,000 तक। हमारे गौशाला उनको पैसा भी देता है, नौकर भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं अब जो अपनी तरफ से फ्री बिगड़ तनख्वाह के भी काम करते हैं, सेवा भाव। यहाँ पर जो जितने भी सामान जैसे दूध बिकता है उससे अलग भी जैसे कुछ आप अलग से बना के कुछ बेचते हो? हाँ, धूप बत्ती भी बनती है, दूध भी बिकता है, धूप बत्ती बनती है। और सबसे बढ़िया यहाँ गौमूत्र है, गौमूत्र का अर्क है। उसको अगर सुबह आप 2 चम्मच लोगे, शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ जी, गाय से जुड़े जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो जैसे गोकाष्ठ है, गोमूत्र है, गाय से बना देसी घी है, गो दूध है, गाय के गोबर से बनी खाद है, इस प्रकार की चीजों को परचेज करना चाहिए, अपने जीवन में भी उपयोग करना चाहिए। जब आप भ्रमण करते करते थक जाएं, तो गांव की महिलाओं द्वारा बनाई गई सुंदर दरियों पर, चारपाई पर आराम का अनुभव ले सकते हैं। दरियां खरीद भी सकते हैं। दिल्ली जैसे शहर में जहां जीवन भागदौड़ और प्रदूषण भरा हो, ऐसे में हरेवली गांव का शांत माहौल, गांव वालों का स्नेह आपको खुशी का अनुभव देगा। सारा दिन चहल पहल रहती है। सभी गौसदन में सेवा भाव से तो आते ही हैं, पर साथ ही साथ शुद्ध खाने के उत्पाद व साफ सफाई के उत्पाद जैसे फिनाइल वगैरह भी लेकर जाते हैं। साथ ही साथ गांव में चारा काटने की मशीन, ट्रैक्टर आदि का भी ज्ञान मिल जाता है। पूरा वातावरण भारतीय मूल्यों पर सजा व सवरा है। गाय को माता कहा जाता है और गाय की पूजा भी की जाती है। गौसदन में हर तरह की गाय का ध्यान रखा जाता है। गर्भवती गाय के लिए अलग से खाना राधा रसोई में पकाया जाता है। गर्भवती गाय के लिए पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो भी व्यंजन बने वो पौष्टिक व्यंजन बने, ताकि गर्भावस्था में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी पोषण संबंधित कमी का एहसास न हो। गौसदन की एक खास बात है कि यहाँ सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं, जैसे चारा काटना, पशुओं के लिए खाना बनाना, साफ सफाई का ध्यान रखना, पर्यटकों पर ध्यान देना, इस बात का भी ख्याल रखना कि गाय को खिलाने के लिए पर्यटक क्या लाए हैं, वह कितनी मात्रा में गाय को खिलाना है। सारा प्रबंधन गौसदन में रहने वाले सेवक व सेवकों के परिवार करते हैं। गाय के स्वास्थ्य संबंधित सारी सुविधा का ध्यान रखने के लिए चिकित्सक हर समय उपलब्ध रहते हैं। वे पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ हर एक गाय के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। छोटी से छोटी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का ध्यान पूर्वक
समय रहते सुलझाना जरूरी हो जाता है। गौ सदन में सूखा भूसा पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करके रखा जाता है। वे चारे का अच्छे तरीके से संरक्षण भी किया जाता है ताकि कभी भी गाय को चारे की कमी ना हो और वे किसी भी प्रकार की परेशानी को ना सहें। गाय के कुछ वार्ड ढके हुए भी बने हुए हैं। रात को उन्हें खुले वार्ड से ढके हुए वार्ड में रखा जाता है ताकि वे ठंड से बच सके। गौ सदन में साफ सफाई पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। कुछ सेवक परिवार वहां मुफ्त में रहते हैं और सेवा कार्य भी करते हैं। एक पूजा स्थल भी है जहां सुबह व शाम को पूजा होती है। श्रद्धालु यहाँ दर्शन करते हैं और प्रसाद भी बांटते हैं। एक बहुत ही संस्कृति से भरा यह गौशाला। बच्चों के लिए पार्क है, वहाँ झूले लगे हैं। बच्चे, जवान व बड़े बूढ़े सभी के मनोरंजन व खेल कूद का ध्यान रखा जाता है। पूरा माहौल बड़ा ही खुशनुमा रहता है। मानवीय व सामाजिक रिश्तों का एक अनोखा अनुभव देखने को मिलता है। चलते चलते एक बार फिर से आनंद ले सकते हैं रागिनी कार्यक्रम का। पूरे स्वागत सत्कार व सम्मान की अनुभूति होती है हरेवली गौसदन में आकर। आप अगर निजी वाहन से आते हैं तो वाहन पार्किंग के लिए मुफ्त सेवा भी उपलब्ध है। भारतीय संस्कार, संस्कृति, कला व कौशल का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।